Afternoon to all the participants. My name is Vikas and I welcome you all in this online webinar hosted by Patliputra Sahodaya on the topic gamification and differentiation in learning. Please write in the chat box if I'm audible to you. If my sound is clear, if you can clearly hear me, please write yes. Okay, thank you very much. So teachers, you all know that when we go to school, when we go to our classes, and we prepare lesson plans, we start to teach. Our motto is to make all the students educated, make them understand whatever the topic we are dealing with. It doesn't matter which subject I'm teaching, it doesn't matter which topic I'm dealing. What we think that if I have started a topic, if I have started the discussion of a topic in my class and the class has 40 students, I, as a teacher, try my best so that all 40 out of 40 students get to learn what I intend to make them learn. Many times, with the passing of time, we become disappointed. And this disappointment leads to a very rude way of teaching, that I can say, a very strict or a very monotonous way of teaching. That is, we go to the class, we just start delivering the lecture, we write the notes on our boards, and we expect the students that they learn each and everything. Now, our today's topic is gamification and differentiation. And I hope that after the discussion of 1 hour, I will be able to change point of view and I think you will agree that gamification is very important. Teachers should try to implement some gamification or differentiation techniques so that students get interested in learning. Someone is writing my voice is not clear. Is that so? Please, other members, please just confirm it. I'm using an external mic, so I hope this should not be a problem. But if it is, I'll try to make it up. Please write in the chat box if my sound is clear. अगर मेरी आवाज क्लियर है, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं मेरी बातों को. अगर मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो मैं तेज बोल सकता हूँ. Okay, okay. I understand. I think that. Okay. Give me. I'll try to clear it. Okay. Can you now confirm if my sound is clear? Is my sound clear now? Clear. Okay. Thank you. Okay. There might be some network issue. So I have just refreshed my network. If it is cracking, you can also refresh your network so that that connection never breaks. So my point of view is that in which class we are teaching, which subject we are teaching, I don't think it is that much of necessary. See, when we go to the class, we face 40 students. These students are full of energy and these students just want to have fun in their life. Now, a teacher is a person in their life which brings pressure, which brings boredom. I'm talking about the point of view of many students. What they think that अरे यार ये सर आए हैं, अब दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा लेक्चर देंगे, दोबारा मुझे होमवर्क बनाना पड़ेगा, दोबारा मुझे याद करना पड़ेगा, इतनी सारी मुश्किलें, लाइफ का सारा फन खा जाते हैं सर ये, या ये मैम आती हैं तो. This thinking may be due to of the monotonous way of teaching. Now, what we see in our schools, the mother teachers, हम लोग देखते हैं उनको, हम लोग दूसरे स्कूल्स के भी वीडियोस के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, कई सारे ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म से, जहां हम लोग ये देखते हैं दैट प्राइमरी क्लासेज में, स्पेशली फाउंडेशनल क्लासेज में, टीचर्स प्ले बेस्ड एक्टिविटीज कराते हैं, गेम्स वगैरह के थ्रू बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं, एंड वी ऑल्सो सी दैट students enjoy it a lot. They do not feel it like it's a burden to them. So will you not agree that if this happens with us also, like if I'm going in standard 10th, and if I can implement some kind of technology so that students became interested become interested to hear me, or they start waiting for me that okay, the third period is of Vikasa, he will come and he will teach in a very interesting way, he will implement some gamification techniques, he will implement some differentiation techniques, he will do something that will make us happy, he will do something that will lead to a very precious smile on our faces. So we have to do something. So what is gamification? Gamification is a powerful tool that can transform the classroom experience, making learning more engaged, personalized, and effective. If you can see me, if I am visible to you, आप मेरे पीछे कुछ देख रहे हैं इधर, ये कुछ आता हुआ. What do you think? Why have I done this? Any thought? क्यों किया मैंने? पहला रीजन तो ये, मैंने अपना बैकग्राउंड छिपाने के लिए किया हो. दूसरा, फोटो क्यों नहीं लगाई मैंने? सिंपल सी, अगर आप रिपीटेड व्यूअर्स हैं मेरे वेबिनार के तो आपको पता होगा एक येलोविश सा बैकग्राउंड में जनरली लगा के छोड़ देता हूँ. व्हाई दिस आई कैचिंग थिंग टुडे? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? आपको क्यों लग रहा है सर आज मजाक के मूड में इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या कुछ और? अट्रैक्शंस, ओके, अट्रैक्टिव लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यस, तो एंगेज ऑल द व्यूअर्स, वेरी गुड मैम. सी, माय टॉपिक इज gamification to generate interest. Definitely this may happens कि आप लॉग इन करें, आपको मैं दिखूं और आपको लगा अरे यार ये फिर आ गया, फिर 1 घंटा लेक्चर देगा, अब चला जाएगा, आप फोन कहीं साइड कर दो. सो मैं थोड़ा सा इसको अपने बैकग्राउंड को इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ सो दैट पहले व्यू में मेरे से पहले ये दिखे आपको, आपको लगे कि अरे यार ये कुछ तो अलग सा किया हुआ है, पीछे उस लाइट के पास से कुछ आएगी क्या इधर इससे. सो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक. मैं वेबिनार में एटलीस्ट इसको कर सकता था. हमारा वेबिनार का टाइम जो है वो थोड़ा और लंबा होता तो मैं और भी कई सारी एक्टिविटीज इसमें डाल पाता. हम लोग ऑनलाइन में भी काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं. व्हाट आई इंटेंड टू से दैट गेमिफिकेशन की जैसे ही नाम आती है ना, हमें लगता है कि अब क्या बच्चों को कबड्डी खिलाएं क्लास में ले जाकर या ग्राउंड में ले जाकर, वो तो वही खेलना चाहते हैं, क्या उनको क्रिकेट खिलवाएं? नहीं. फॉर अस, for us, for a teacher, gamification means are techniques that will make the teaching process interesting and easier for students. हमारे लिए पढ़ाने के तरीके को जो इंटरेस्टिंग बना दे वो gamification है. बच्चों के लिए सीखने के प्रोसेस को जो इंटरेस्टिंग बना दे वो gamification. What is gamification? Game-based approach, motivational elements, or fostering enjoyment. These all three are part of gamification. Gamification involves integrating game-like mechanics and dynamics into non-game context. आप किसी ऐसे टॉपिक में हैं, किसी ऐसे कंटेक्स्ट पे आप बात कर रहे हैं, दैट इज अ नॉन गेम कॉन्टेक्स्ट. आप सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, आप लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, या आप साइंस में आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में तो फिर भी कुछ स्पॉटी कंटेंट्स आ सकते हैं. आप क्लासरूम में ये चीजें करने वाले हैं, क्लासरूम में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस डिस्कशन को भी आप किस तरीके से गेम बेस्ड अप्रोच पे लेकर जाएंगे, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एंड अगेन, it's your topic, it's your pupil, you may decide. Like when I am a science teacher, so when I start teaching any topic, I like to find examples that are very related to students.
I like to find examples which they find interesting. Means I put my feet into their shoes. I start thinking like them. And on the basis of that, I give them an example. What happens as a result at a very important topic or at a very complex topic, when I deliver example, I see smile on the faces because they get to connect with it very easily. They see it very interesting. Like if I am teaching atmospheric pressure while teaching force and pressure in standard 8, and I am giving some very big examples like crashing of aircrafts or crashing of submarines due to uh, difference in atmospheric pressure or excessive or low atmospheric pressure, I don't think that they will be able to correlate with it. That is why if you have seen NCRT book, it has given a very simple activity of water bottle by pouring hot water and then making it empty very soon. We see the difference in air pressure and the effect of it. Now students get to connect with that kind of examples. And if I give them few bottles and if I tell them to try to do it, what do you think? Will they be interested in doing so? If I am teaching atmospheric pressure, I can do two things. First thing that many of us do, that I can give them a project work that yes, prepare a chart paper on which you have to write each and every crucial and important points related to atmospheric pressure. Or I can tell them, go to your home, take a water bottle, try to do this activity that is given in your NCRT book, record a very short video and send it to me. And if your thank you, sir. And if your activity is successful, if your video is good, if you have delivered it in a very nice way, I'll post it on my channel. I'll post it to my school's website. I'll forecast it in my school's reception area where my smart TV is placed, where the guardian used to comment it. I'll give you an award. That award can be anything, a chocolate of 10 or 20 or 30 rupees. It should not have to be very costly. What do you think? Which option will make the students much interesting, more interesting? The first one where I have told them to prepare a chart for, or the second one? Obviously, the answer will be the second one. See, a bitter truth is that you know the parents are stick to an excuse. The excuse is COVID. Whenever, as a teacher, you will complain to the parents that please make sure that your child stays away from the mobile phone, they will just start speaking that अरे सर पहले नहीं होता था लेकिन कोरोना आया ना, ऑनलाइन क्लास चलने लगी तो मोबाइल देना पड़ा और अब उसको आदत लग गई है। तो फाइनली ब्लेम वो दो जगह आती है। पहला, वो ब्लेम आ जाएगा कि भैया कोरोना की गलती। दूसरा, स्कूल वालों ने बोला था कोरोना में ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो आपकी गलती, गार्जियन की गलती नहीं। सो हमारी गलती तो है, हमारे ऊपर वो ब्लेम आ चुका है, हमारे ऊपर वो दोषारोपण हो चुका है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट, ठीक है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्कूल को अपने क्लास के गार्जियंस के सामने, तो मेरी गलती हुई, मैंने कहा ऑनलाइन क्लास चला कर होने के लिए, आपने फोन खरीदा, गुड। अब मैं फोन से रिलेटेड ही होमवर्क दे रहा हूँ। अब बच्चा जब फोन छुएगा ना, तो अब उसको जरूरत पड़ेगा कि अरे सर बोले वीडियो बना के भेजने के लिए। अब बच्चा जब फोन छुएगा ना, तो उसको दिखेगा अरे यार सर तो 50 ऑनलाइन क्वेश्चंस का सेट भेजेगा, इसको सॉल्व करना है। बच्चा जब देखेगा ना सर एनिमेटेड वीडियोस, अगर कंप्यूटर टीचर्स हैं तो एनिमेटेड वीडियोस बनाने के लिए बोले हैं, कोडिंग करने के लिए बोले, आई विल गिव देम इन विच दे आर इंटरेस्टेड। मेरा मोटो ये है कि मैंने जो लेसन प्लान प्रिपेयर किया ना, और उसमें जो लर्निंग आउटकम्स मैंने लिखे हैं, मैं उसको अचीव करूं। आई डू नॉट राइट द मेथड्स दैट मैं यही वाले मेथड यूज करूंगा और इन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए
ये लर्निंग आउटकम्स अचीव करूंगा। मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, मेरे लर्निंग आउटकम्स क्लियर है, मैं क्लासरूम में कैसे पढ़ाऊंगा ये क्लियर है उस लेसन प्लान में। बट as from the students I have in my class, I'll decide which type of homework I can give. Recently, I have given a homework to my school students that they have to prepare a PowerPoint presentation to the students of Standard 9. And they have to explain each and everything that is written in chapter 1. And that PPT should not be like this, like the still PPT you are just watching it. That should be moving. Like if the child is saying that yes, the particles have movement, I should be able to see the movement of the particles when I play the PPT. I have not told them to prepare a video, I have told them to prepare a PPT. Now, for preparing that PPT and for going to that level of animation in PPT, they will have to go to the computer lab, they will have to consult to computer teachers, they will have to learn a lot of things. Definitely, they will have to work hard. But once they have done it, they will feel much more interested. And I know that when I'll start chapter 2, student will ask that, not everyone, but some students will definitely ask me that, should I prepare the same kind of PPT on this also? This will happen. So for us, for teachers, gamification is that. Second is motivational elements. It leverages elements like points, badges, leaderboards, and challenges to enhance students' engagement and participations. See, motivational elements can be anything. Now, we all conduct class tests. Will you agree? We all conduct class tests. Generally, at the end of each and every chapter, whenever we finish one chapter, what we do? We conduct a class test in our class. That may be of 10 minutes, 20 minutes, or 30 minutes. That may be of 5 marks, 10 marks, 20 marks, depending upon your topic, your subject, and the time you have. You will agree. And you will also agree on it that students hate it. I'm using a very hard word, but it's the truth. Students just hate the class tests, the periodic tests, the summative examinations, and we see their hatred by the less number of presence in the class. If the students get to know that of today will conduct tests and I'll have to appear in that test, they will simply be absent from the class. Now, how to deal with it, or what is our motto? Why do we take conduct class tests? If you are not having additional presence from the management side of the school, what do you think? Why do you conduct class test as a teacher? Why don't you just go ahead to the next topic or the next chapter? Please answer in the chat box. Why do we conduct class tests? What is our objective? To check students' understanding. Okay. Okay. What is the best way to check students' ability and understanding? Can you say what is the best way to check students' understanding? Can you please tell? Quiz, yes, quiz can be one method. Oral tests. Okay. Try to recall your time when you were students or when you were new in teaching field. How did you get to understand that this particular topic of yours is now clear? You do not have any kind of confusion in this topic. How did you use to understand that?
योरसेल्फ, नॉट द अदर्स। आप जब आप जब नए नए पढ़ाना आपने जब नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, हम सभी का साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं था कि मैंने भी जब पढ़ाना स्टार्ट किया ना तो 8, 9, 10, 11, 12 सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स, हर छोटी छोटी पॉइंट्स मुझे एकदम अच्छे से याद थी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद थी, बट होता है ना वो एक छोटा सा टॉपिक जो दिमाग से निकल गया है, भूला तो नहीं था बट दिमाग से निकल गया है, उसका एक छोटा सा की कंसेप्ट अब दिमाग से निकल गया है क्योंकि मेरे दिमाग को वो इंपॉर्टेंट नहीं लगा। कब वो चीज हमें क्लियर हो जाती है कि नहीं अब तो सब याद है, अब तो बिना बुक खोले मैं पढ़ा सकता हूँ। ऐसा क्या हुआ था कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये वाली टॉपिक क्लियर है, अब मुझे मुझे बस अपडेट्स चेक करनी है, पीछे जाके सेम चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ तो हुआ होगा लाइफ में, एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब हमें ये रियलाइज हुआ होगा। कैन यू रिकॉल दैट मोमेंट? इफ नॉट, लेट मी हेल्प यू। हम लोग ऐसा तब कर पाते हैं ना जब हम लोग क्वेश्चंस फ्रेम कर पाते हैं। यस, मैं एक्सप्लेन इट इन वेरी कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली। जब आप क्वेश्चंस कर पाते हैं, जब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं उसको काफी कॉन्फिडेंटली, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दी जाए, सपोज गेमिफिकेशन इन लर्निंग आपको दी जाए, आप 1 घंटे के बाद अगर आप इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस अच्छे से एकदम हाई लेवल वाले फ्रेम कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने ये 1 घंटे का लेक्चर और डिस्कशन वॉट एवर यू वांट टू से इट, आपने अच्छे से सुना है, आपने अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट किया है इस पे, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू prepare questions related to this topic also. So what I do sometimes, not on each and every chapter, but sometimes on some chapters, on some topics, I used to go to the class and I tell my students it is a class work, it is not a homework thing. इसको याद रखिएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ तो वो क्लास में ही करवाता हूँ मैं, होमवर्क मेरे हिसाब से नहीं करवाना चाहिए उसको। क्यों, वो मैं आगे बता रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब क्लासेज में जाता हूँ, सपोज एक टॉपिक कंप्लीट है और मेरे लेसन प्लान के अकॉर्डिंग मुझे अगला चैप्टर, अगली टॉपिक जो है वो अभी 1 दिन बाद स्टार्ट करनी है, क्लास टेस्ट मैंने उसके बाद के प्लान कर रखे हैं, लेकिन मुझे अभी बच्चों को चेक करना है दैट हाउ मच दे हैव लर्न। आई सिंपली गिव देम दैट प्रिपेयर 10 MCQ फ्रॉम दिस टॉपिक, प्रिपेयर 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड यू विल बी शॉक्ड। आप देखेंगे जो अच्छे बच्चे हैं ना, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफी हाई होता है। समटाइम्स यू विल फील दैट अरे ये वाला क्वेश्चन तो काफी अच्छा, आप तो इसको एग्जाम में दे सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो बच्चे क्लास में जनरली ध्यान नहीं देते, जिनका मार्क्स कम आते हैं, उनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस कुछ खास अच्छे हैं नहीं, जो क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम किए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं ना, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, देन एनालाइजिंग, और भी कई सारे फेजेस पढ़ते हैं, हम लोग पिरामिड देखते हैं इस तरीके से। यू विल गेट टू सी दैट the children who are being successful in preparing complex questions are achieving good marks in examinations, and those who are not, they are actually not achieving good marks. Why is this happening? क्योंकि क्वेश्चन तो आप तभी प्रिपेयर कर पाएंगे ना जब आप टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, जब आप उस पर टाइम देंगे। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाली जो है ना, आई थिंक मोर स्टडी मोर क्वेश्चन इट इज। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। नाउ साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है बच्चों पे? मैं क्लास में जाऊं, मैं क्लास में जाकर बोलूं कि आज क्लास टेस्ट है, एंड द मोड ऑफ क्लास टेस्ट इज दैट आपको इस बार क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, आंसर नहीं प्रिपेयर करना है, आपको क्वेश्चन प्रिपेयर कर देने आपको इस टॉपिक से। टेक आउट एनी वन बुक ऑफ द साइंस, मीन आई एम ऑब्वियसली अ साइंस टीचर, सो आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ साइंस ओनली। साइंस की कोई एक किताब निकाल लीजिए, आप एनसीईआरटी ले लीजिए, एस चंद ले लीजिए, या आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, बाकी चीजें आप हटा दीजिए साइड, और उस एक बुक से इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके मुझे दो। एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस अलाउड नहीं है, आपको टॉपिक से ढूंढने होंगे। यू विल सी दैट चिल्ड्रन आर नाउ वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको लग रहा है हम लोग तो क्वेश्चन दे रहे, हम लोग आंसर तो दे ही नहीं रहे। माई मोटो इज दैट आई हैव टू चेक कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सेकेंड थिंग इज दैट मेरी एक्टिविटी से उनकी लर्निंग इंप्रूव हो। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कोई टॉपिक छूट गई है, कोई सब टॉपिक छूट गई है, और मैंने वही वाली टॉपिक, वही वाली सब टॉपिक उसको दे दी, तो अब तो उसको पढ़ना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब वो पढ़े तो उसको एक नया क्वेश्चन, एक नया डाउट मिले, जो शायद वो डायरेक्टली मेरे से नहीं पूछ रहा, बट वो पेपर में लिख के दे दे मुझे।
दिस में हैपन। नाउ घर से क्यों नहीं देना ये, क्योंकि जब आप घर से देंगे ना तो वो चैट जीपीटी, जेमिनाई, बिन्स.ai और भी कई सारे एआई प्लेटफॉर्म्स, उनसे पूछ के लिख देंगे। मेरा मोटो ये नहीं कि 10 क्वेश्चन आ जाए, मेरा काम आसान हो जाए, मेरे उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो जाए। मेरा मोटो ये है कि बच्चे खुद से प्रिपेयर करें क्वेश्चन। एंड फॉर दिस मैंने कुछ ऐसा नहीं था, मैं कहाँ से सीखा इस बात को मैं बता दूं आपको। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई वाज प्रिपेयरिंग, माय मैथ्स टीचर यूज्ड टू से, ये वाली टॉपिक क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो? इफ यू से यस सर, क्वेश्चंस बना के दिखाओ, मींस प्रिपेयर अ क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक। इस टाइप का क्वेश्चन आप फ्रेम कर पा रहे हो, इसका सॉल्यूशन आपको पता है, देन डेफिनेटली यू हैव अचीव्ड दैट टॉपिक। इफ नॉट, यू हैव टू वर्क आउट ऑन दिस। आपका अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। एंड आई फाइंड इट वेरी हेल्पफुल कि एक्चुअली मदद तो होती थी। सो दैट कैन बी अ मोटिवेशनल एलिमेंट फॉर योर क्लास। बच्चे को मजा आता है, उनको लगता है हर बार ये क्वेश्चन देते थे, इस बार मैं इनको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मजे से करने वाले इस तरीके के कामों को, और उनकी लर्निंग भी इंप्रूव हो जाएगी। फॉस्टरिंग एंजॉयमेंट, gamification aims to make learning fun and enjoyable, tapping into students' natural desire to compete, progress, and succeed. Now, what happens? We have seen the authoritarian kind of teachers. They think that if the students in the class are giggling, laughing, smiling, that means he is not having a good control on the class. Sometimes principals, the school management also think like this. Sometimes it may happen that teachers think that if two children are discussing, the teacher is not having control on his or her class. But it is not always true. If my child, if my student is enjoying the discussion of any topic, any curricular topic with his classmate, I will motivate it under my surveillance. Because again, my objective is make them a learned person. My objective, which I have written in my lesson plan, is they get to understand, they get to analyze, or they get to experiment this or this thing. If it is a discussion way, if it is peer-to-peer discussion method, let it be so. That should be productive. The motto is whatever is happening in the class, that should be productive. Now, sometimes teacher also think that if I'll put some examples that are very related to students, they will start making fun of me, or they will start taking me for granted. This never happens. If you are a good teacher, if you are effective teacher, it doesn't matter how much you make them laugh in the class. I am a kind of teacher with whom students used to laugh and enjoy a lot. And at the same time, I am the kind of teacher from whom they fear a lot. उन्हें पता है कि सर जब क्लास में पढ़ा रहे हैं ना तो काफी हंसा रहे हैं, काफी मस्ती करा रहे हैं, बट जब ये असेसमेंट लेंगे ना तो फिर इनका भी कराल रूप देखने को मिलेगा, तो मुझे प्रिपेयर करके आना है। जब मैं बदमाशियां करूंगा ना, कुछ इनडिसिप्लिन हरकत करूंगा, तो सबसे बुरे इंसान यही साबित होंगे, सबसे ज्यादा पनिशमेंट भी यही देने वाले हैं। ऑब्वियसली वो कॉर्पोरल नहीं होगी, बट पनिशमेंट तो होगी। फिर उस टाइम नहीं होगा कि सर आप क्लास में आए थे, मेरे साथ मस्ती मजाक हुई थी पढ़ाते पढ़ाते, तो उस चीज को याद करके छोड़ दीजिए। सो माई स्टूडेंट्स आर नॉट फियरिंग, एक्चुअली they are respecting, and the true nature of respect is that a student will laugh when he have or she has to laugh. They will listen to you when he or she needs, and he will take care of you, or you will take care of that child if needed. So fostering enjoyment is not bad. The result of fostering enjoyment is that the child becomes very confident, and this confidence taps into their natural desire to progress, the natural desire to compete, and the natural desire to succeed. हमारा जब जन्म होता है ना, हमारे ब्रेन में
कुछ उस तरीके की सेटिंग्स पहले से आती है। वी हैव अ नेचर ऑफ कंपीटिंग विथ वन अनदर। छोटे बच्चे को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसके भाई का कपड़ा उससे ज्यादा अच्छा है, उसका वाला थोड़ा खराब है। उसको ये बात खुद पता होती है और वो खुद अपने माँ बाप से लड़ के अच्छा वाला लेता है कि बेटर वाला तो मेरे पास आना चाहिए, बाकी दूसरा आप भाई को दे दो, बहन को दे दो। बाद में पेरेंट्स का प्रेशर आते रहता है, बाद में पेरेंट्स उन पे जो भी चीजें करवाते हैं उनको समझाते हैं, वो अलग चीज है, बट दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू compete. If you will foster the enjoyment, this natural tendency to compete with each and every peer in the class will remain in the class, will remain in them, and this will help in the progress. In the last examinations, I was teaching in one of the classes of standard 8, and I told them that if you will achieve 100% marks in science, I'll be rewarding you. I'll be giving you something that will be a surprise for you. Now, my students know that if I have told something like this, I'll give them. You will be shocked. 12 students had scored 98% in science. 6 had scored below 98%. It was between 80 to 98%. 2 or 3 were below 80. And the remaining students out of 50 had achieved 20, means 100%. That was a 80 marks examination. So 80 out of 80. I have done nothing special. I did nothing special. I was teaching in a regular way. I was just tapping into the natural tendency to compete. I was just telling them to compete and nothing else, and not directly. It was an indirect way. By competing, they ensured their progress and their success. So, gamification is something that will help in these diverse manners. Well, let's move ahead. Benefits of gamification in the classroom: increased engagements, personalized learning, and skill development. When I was a student, uh, I was very blessed to have a teacher of economics who I think is now at a very big place. I should not call out the name of that place. But what used to happen that he used to come to our class. He asked us the topic, and he used to start delivering lecture, or he used to start explaining, and 90% students of the class gradually started doing their own work. Some of them started to talk, some of them started to write something or read something other than economics. Very few students, 2 or 3 or 4 students, used to listen to that person very carefully. But when I grew up, and I think when all of my classmates grew up, they realized that he was a very good teacher. He was a very knowledgeable teacher, and we missed to gain that knowledge from that person. The kind of knowledge we could have gained, we missed that, and it happens. I think it would have happened to most of us. Now, what is the reason? Why did it happen? Although he was a very knowledgeable person, he was not very successful in making an engaging classroom. He was not very successful in increase the engagement, although I respect him a lot. But it's maybe it's our fault also. But as a teacher now, when I go to the class, I remember that I do not need that students get to fear by me. ऐसा नहीं कि सर हैं और कुछ हल्ला कर दिया तो सर पीट देंगे, पनिशमेंट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा.
ऐसा हो कि बच्चे ध्यान दे मेरे ऊपर, बच्चे सुने मेरी बातों को, बिकॉज उन्हें ऐसा लगे कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात डिस्कस हो रहा है, वो छूट जाएगा। उन्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरी ही बातों में आए, मैं जो लिख रहा हूँ उसी में आए, मैं जो बता रहा हूँ उसी में आए। एंड इट इज अ स्किल, इट नीड्स टू बी डेवलप्ड। नाउ the methods that you will use in this, that is gamification, personalized learning. Game based approaches allow for differentiation, catering to individual learning styles and pacing. Again, मैं अपने सारे वेबिनार्स में कहता हूँ कि हमारे क्लासेस में डाइवर्स लर्नर्स हैं, VAR के की बात मैं करता हूँ। और जब गेमिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब आप गेमिफिकेशन को इंक्लूड करेंगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट व्हाट विल हैपन, दैट व्हेन for the first time you will explain the topic in a very simple way, next time you will give an example or a very short activity, and then you will engage the peer. So तीन काम आपने किया, बोर्ड वर्क भी आपने किया होगा, चार काम हुए। बोर्ड वर्क से जो बच्चे सीख गए, दे आर द विजुअल लर्नर्स। आपकी आपको एक्टिविटी करते हुए जो देख के सीख गए, दे आर द विजुअल लर्नर्स। आपकी बातों को जो सुन के सीख गए, दे आर ऑडिटरी लर्नर्स। जो आपके रियलिस्टिक एग्जाम्पल से या आपके लिखी गई चीजों को पढ़ के सीख गए, दे आर द लर्नर्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। एंड जिनको आपने एक्टिविटीज में इंगेज किया और जिन्होंने एक्टिविटीज से सीखा, दे आर द काइनेस्थेटिकल लर्नर्स। नाउ दिस शुड हैपन। जो आज इस पीपीटी को इस वक्त इस स्क्रीन पे देख रहे हो और जिनको पीछे बैकग्राउंड में फोटो दिख रहा है ना, जिनको सुंदर से पहाड़ दिख रहे हैं, सुबह की लाल किरण दिख रही है, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, यू आर विजुअल लर्नर। क्योंकि आपने काफी डीपली उस चीज को देखा। आप में से जितने लोग जैसे स्क्रीन आ रही है लाइंस पढ़ने लग रहे हैं ना, यू आर द लर्नर्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। और जितने लोग ऑडियो वर्जन में करके मेरी बातों को सुन रहे हैं, यू आर द ऑडिटरी लर्नर। और जो लोग ढूंढ रहे हैं ना वेबएक्स पे कि अगर मैं वीडियो ऑन करूं तो वो पीछे कैसे प्ले करेगा, यू आर द काइनेस्थेटिकल लर्नर। नाउ डिफरेंशिएशन इज नीडेड, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन लेके आएंगे, जब आप गेमिफिकेशन को इंक्लूड करेंगे क्लासरूम में, तो आप डाइवर्स मेथड्स को टच करेंगे। एंड जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली लर्निंग इंप्रूव करेगी। थर्ड, स्किल डेवलपमेंट। गेमिफिकेशन fosters the development of critical thinking, problem solving, and collaboration skills. Now what happens, you must have observed this, that हमारे क्लासरूम्स जो होते हैं ना, वो तीन तीन चार चार पांच पांच बच्चों के ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। एंड अगर आप उसी टीम को काम करने के लिए देंगे तो वो बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन आप दो चार ग्रुप में से एक एक को मिला के एक नया ग्रुप बना दीजिए, दे बिकम वेरी अनकंफर्टेबल, उनसे ना हो पाता है, वो हार मान जाते हैं। नाउ गेमिफिकेशन विल इंश्योर कि आपके क्लास का हर बच्चा हर दूसरे क्लासमेट के साथ कंफर्टेबल है, सबसे सीखने के लिए तैयार है, सबके साथ काम करने के लिए तैयार है। कोलैबोरेशन बढ़ेगा, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होंगी तो टीम बिल्डिंग क्वालिटीज आएगी, टीम लीडरशिप क्वालिटीज आएगी, कई सारी चीजें आएंगी। एंड दीज ऑल आर स्किल्स। एज अ टीचर we develop a variety of skills, and when we fail in doing so, we see a class जहाँ कुछ किताबी कीड़े बैठे हैं जिनको रटने आता है सारी चीजें, एग्जाम में लिख देंगे, ना वो सोसाइटी में खड़े होकर कुछ बोल पाएंगे, ना वो चार लोगों के साथ मिलकर बातें कर पाएंगे, एंड मेनी मोर थिंग्स। Engaging students through game-based learning, interactive lessons, incorporate digital games, simulations, and interactive activities to keep students engaged and motivated। क्या कर सकते हैं आप, डिजिटल गेम्स को यूज कर सकते हैं आप। जनरली हम सभी के स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, कई सारे डिजिटल गेम्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और उनके बेसिस पर आप काम करवा सकते हैं। मैं आपको अपने फोन पे स्क्रीन दिखा दूं, इफ यू मे सी इट।
an app named Unreal Chemistry. I'll just tap it so that it opens. Now, what is this Unreal Chemistry app? This is a digital game app for chemistry, and it has options like mix, burn, periodic table, solubility sim, balancer, and mixing game. If I'll go to mixing game, I'll just read the level. I'll show you it to your screen also. It's level 1. मैं अपने सामने रखता हूँ ताकि ये दिखता रहे. मैं पढ़ के बता देता हूँ उसमें क्या लिखा है. Now the objective is prepare a dilute sulfuric acid H2SO4 solution by carefully diluting a concentrated sulfuric acid stock solution. मुझे dilute sulfuric acid बनाना है concentrated sulfuric acid solution से. मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ. स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक बीकर आ गया. नीचे ऑप्शंस आ गए कि क्या क्या चीजें पॉर करनी होगी, कौन सा एसिड लेना होगा, कौन सा वाटर लेना होगा. और अगर मैं यहां से चीजें सेलेक्ट करूं, मैंने एसिड पोर कर लिया. नाउ द साइंस टीचर must be knowing that for diluting an acid we add acid to water, but in this game what I have done now, मैंने बीकर में पहले एसिड ले लिया है, और अगर मैं अब इसमें वाटर मिलाऊं, you will be shocked, they will show me getting blast. वो बीकर फटते हुए दिखा देंगे. they will show what will happen अगर मैं पानी मिलाऊं इसमें. तो एंड इफ मैं पहले पानी पोर करूं बीकर में और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाऊं, दे विल शो मी ईच एंड एवरी डेटा. एंड लास्ट जैसे गेम्स में होता है सक्सेसफुल मार्क्स मिलेंगे, सेकंड लेवल पे मैं जाऊंगा, ये सारी चीजें होंगी. सो नाउ इट इज अ डिजिटल गेम. मैं चाहूँ तो इसको क्लासरूम में अपने फोन को सिंक करके करा सकता हूँ. मैं चाहूँ तो बच्चों को गेम बता सकता हूँ कि करके देखो. मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि बच्चे गेम खेलते. मैं खुश रहूंगा इस बात से ना कि बच्चे पबजी और फ्री फायर की जगह ना अनरियल केमिस्ट्री खेल रहे हैं, क्योंकि जब वो इसको खेल रहे हैं ना, तो वो केमिस्ट्री लैब में जाकर कई सारी चीजें जो काफी सारा रिस्क लेके भी नहीं सीख पाते, या काफी सारा रिस्क काफी सारा डैमेज करा के सीखते, वो यहाँ सीख लेंगे और वो 40 to 50% प्रिपेयर हो जाएंगे केमिस्ट्री लैब में एक्टिविटीज को करने के लिए. सो इट इज अ गुड साइन फॉर मी एंड इट विल मेक द क्लासरूम इंटरैक्टिव. सिमुलेशंस, यू कैन गो टू द वेबसाइट. आप 4 कीवर्ड्स याद कर लीजिए. PHET, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के लिए ये कीवर्ड है. साइंस टीचर्स यूज कर सकते हैं इसको, कंप्यूटर टीचर्स यूज कर सकते हैं इसको. PHET, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने काफी सारे सिमुलेशन वीडियोस रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं. वर्चुअल लैब्स पर आप टैप इन कर सकते हैं. अनरियल केमिस्ट्री अगेन एक है ही, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपको भर भर के सिमुलेशंस मिलेंगे जो आपके क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाए. क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं कई सारी चीजें हम लोग नहीं दिखा पाते, नहीं समझा पाते, हमारी बातों से बच्चे नहीं उसको समझ पाते. और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम लोग लैब में भी नहीं दिखा सकते, लाइक बायो. अगर मुझे ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस को समझाना है बच्चे को, और मुझे अगर बताना है कि कैसे हर ऑर्गेनेली के छोटे छोटे फंक्शन से सेल का फंक्शन होता है, और कैसे हर छोटे छोटे सेल के फंक्शन से टिश्यू, और टिश्यूज के फंक्शन से मसल्स फंक्शन करती हैं, सॉरी डिफरेंट ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी फंक्शन करती है. मैं ऑर्गन्स तक पहुंच सकता हूं, उसके नीचे पहुंचना काफी मुश्किल है. बिकॉज एज अ टीचर मुझे काफी मेहनत लगी, तब जाके मैं इमेजिन कर पाता हूँ कि कैसे काम करता होगा सेल, कैसे काम करता होगा टिश्यू. बच्चों में वो इमेजिनेटिव स्किल अभी नहीं आई है. सो इट इज वेरी टफ फॉर देम. दिस केस सिमुलेशन हेल्प्स, क्योंकि सिमुलेशन जो चीजों को आप वर्बली बता रहे हैं, जिन चीजों को आप बोर्ड पर ड्रॉ करके बता रहे हैं, वहां इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो, ग्राफिक वीडियो क्लियरली दिखा देंगे. जब आप उनको सेल डिवीजन बताते हैं, जब आप बोर्ड पे बनाते हैं कि सेल ऐसे ऐसे डिवाइड करता है, सिमुलेशन वीडियो उनको बाकायदा सेल को डिवाइड होते हुए दिखाएगा. जब आप मैटर चैप्टर पढ़ाते हुए ये बताते हैं दैट पार्टिकल्स हैव मोशन, वहां पे वो चीजें दिखेंगी. जब आप बताते हैं कि आप एयर प्रेशर को कैसे बढ़ाते हैं और टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिलेशन क्या है, बच्चे शायद कंफ्यूज है. सिमुलेशन वीडियोस में वो दिखेंगी सारी चीजें. सो इट मेक्स द क्लासरूम इंटरैक्टिव.
अदर देन दिस इंटरैक्टिव एक्टिविटीज आप करा सकते हैं, हम सभी के पास अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं इनके, so that students get to engage in the class and they are highly motivated for this. Competitive elements, add the competitive elements in each and every topic or in each and every class. Encourage friendly competition through leaderboards, challenges, rewards to foster a sense of achievement. If your competitive elements are achievement for your students, they will start developing a spirit of competition and they will start competing, and it is a very good sign. स्टोरी टेलिंग अप्रोच, कहानियां सुनाना काफी अच्छी बात होती है। आपने शायद अगर गौर किया, मैं पिछले 52 मिनट्स, 2 मिनट मैंने लेट स्टार्ट किया था, पिछले 50 मिनट से मैं कहानियां सुना रहा हूँ आपको, कभी अपनी कहानी बता रहा हूँ, कभी अपने टीचर्स की कहानी बता रहा हूँ, कभी अपने बच्चों की कहानी बता रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी गुड अप्रोच। आप जो चाहे समझा सकते हैं, जस्ट यू हैव टू अक्वायर दिस अप्रोच। आप कहानियां सुनाना सीख लेंगे, बच्चे सुनेंगे, आप सिखा भी पाएंगे। इट इज अ वेरी नाइस अप्रोच। Weave a narrative, weave a story. Doesn't matter it is a false one or a true one. किसको पता, जादूगर से थोड़ी पूछते जादू था या ट्रिक थी, बस आप दिखाते रहिए जादू। Immediate feedback. Provide real-time feedback and opportunities for students to learn from mistakes and iterate. जब बच्चे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जब वो कुछ परफॉर्म करते हैं, आपको लगता है बच्चे ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, गिव अ पॉजिटिव फीडबैक, गिव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एक्चुअली नॉट द पॉजिटिव फीडबैक, गिव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जिससे बच्चे कुछ अच्छी चीजें सीखा और अगली बार अपनी गलतियों को ओवरकम करके और बेहतर तरीके से वो प्रेजेंट कर। हाउ टू इनकॉर्पोरेट गेमिंग टेक्निक्स, गेमिफिकेशन इन लेसन प्लान। द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। आप गेमिफिकेशन के तौर पे किसी भी चीज को आप लेसन प्लान में इंक्लूड कर रहे हैं, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर कि आप ये एक्टिविटी कराएंगे, क्यों कराएंगे, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। The challenges which you are going to give to the student, that should be creative. The progress must be rewarded and the opportunities should be collaborative. Now, gamification strategy for different subject areas. For mathematics, what can you do? You can incorporate math themes, games, digital simulations, progress tracking systems to make learning more engaging and rewarding. For language and arts, you can use interactive story-based activities. You can use vocabulary building challenges, writing focused competitions to enhance the language skills. For science, you can design virtual experiments. Now we have a lot of resources. If you are not getting time to design your virtual experiment, just search for it. आप एक बार शिद्दत से बैठ जाइए उसको ढूंढने के लिए, आधे घंटे 1 घंटे में आपको एक बढ़िया सा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा जो आप बच्चों को दिखाना चाहते थे। Interactive lab simulations you can prepare, science themed quests you can prepare. It will foster the curiosity and scientific exploration in the topic. Now in social studies, you can incorporate historical role plays, decision making scenarios, cultural discovery, games to deepen understanding of the world. मैं सोशल स्टडीज में एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, do not refer to some web series, do not refer to some serials or movies to give historic examples, because each and every time you do this, you give them a reason to believe on the biasness that is shown in those videos. आप इस बात को तो मानेंगे कि हर मूवी, हर सीरियल, हर वेब सीरीज में कुछ ना कुछ बायसनेस होती है। वो बायसनेस आती है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण, वो बायसनेस आती है क्योंकि मान लीजिए गांधी जी पर एक मूवी बनी, नाउ इफ आई एम एंटी गांधीन and I am the script writer, I will definitely write some points that will explain that why Gandhi ji was not good. And if I am a supporter of Osama bin Laden,
I will definitely write it in the script like Osama bin Laden was a victim and he was, what happened to that person, what happened to that terrorist was bad. So never refer to the videos or the clips that are suited in Bollywood, Hollywood, or in whichever film industry. Refer to the digital content, but never refer to the videos, especially social studies and language arts teacher, because what you are doing is a very great work, and that greatness should not be biased. Now, overcoming challenges in implementing gamification. What are the challenges in implementing gamification? The first thing is resistance to change. Now, this resistance can be from two sides: one from parents, second from management. What you can do? Explain your management, take some time, ask for some time, so that they can also observe your class when you are implementing gamification, and they can understand that yes, gamification and help has help in the improvement of students. पेरेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ग्रेजुअली वो भी समझ जाएंगे. आप उनको समझाइए दैट एवरी टाइम व्हेन दे गेट टू नो दैट बच्चे से आज क्विज करवाया गया तो टाइम पास नहीं था, वो लर्निंग के लिए थी. बच्चे को बोला गया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो वो टाइम पास नहीं है, वो लर्निंग के लिए. वो धीरे धीरे समझे. रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स. नाउ मैं मैंने जितनी बातें की उसमें आपके लिए स्मार्ट बोर्ड्स होना चाहिए, बच्चों के पास कंप्यूटर्स और लैपटॉप का एक्सेस होना चाहिए, बट इट में हैपन दैट सभी बच्चों के पास नहीं हो. सो नाउ इट्स योर टास्क टू एक्सप्लोर लो कॉस्ट एंड फ्री डिजिटल टूल्स which can be available to each and every student. एग्जिस्टिंग मटेरियल्स जो है उनका हेल्प ले सकते हैं आप. एंड द अदर थिंग्स, क्लासरूम मैनेजमेंट भी आपको देखना होगा. देयर शुड बी क्लियर गाइडेंस, मॉनिटर्स, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होनी चाहिए. एंड यू मस्ट इंश्योर दैट गेम बेस्ड लर्निंग रिमेन्स फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप रूल सेट करते हैं गेम्स के, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद खुद नए रूल्स बनाने लगते हैं, फिर जो लर्निंग है ना वो रह जाती है, सिर्फ फन पार्ट बच जाता है. सो इट शुड नॉट हैपन. आवर गोल शुड बी स्मार्ट, specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. Gamification should also be smart. S for specific, M for measurable, A for attainable, R for realistic, and T for time bound. इन पांचों चीजों का हमें ध्यान रखना होगा. Now, evaluation and assessment is also necessary. You have to develop effective methods to measure students' learning and the impact of gamification on academic achievements. Now, assessing the impact of gamification on students' learning, it will basically, you can assess it on three grounds: formative assessment, summative assessment, and student feedback. और आप इसके थ्रू जान सकते हैं दैट गेमिफिकेशन के इफेक्ट्स क्या क्या आए हैं. So I think this is the end from my side. The PPT part has now ended, and we have few minutes, so you can ask if you have any doubt. If you want to have a chat with me related to the topic, I am on it. I am seeing the chat box. Please write here. Thank you for the compliments that you are giving me. If you have any doubt, please write. We must discuss the topic. For science gaming, chemistry में मैं जो यूज करता हूँ that is unreal chemistry. आप सिमुलेशंस के लिए PHET यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो देख सकते हैं. वर्चुअल लैब्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं.
Okay, so I think we are not having any doubts to discuss. So thank you very much for joining this session. And I hope we will again meet in the next webinar. Thank you. Thank you very much for the compliments, your feedbacks and suggestions. I'll try to improve the sessions in each and every webinars. Thank you. Thank you for joining.